Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jitendra Badi. So today I am going to explain the next topic of the chapter, that is valence electron. The valence electron. Yes. What do you mean by the valence electron? The electron present in outermost cell of an atom is known as valence electron. Let us consider an example, that is sodium, whose symbol is Na, atomic number 11, atomic weight is 23. Okay? Yes. Configure it. K contain 2, L contain 8, 2, 8, 10, remaining 1. So M contain 1 electron. So outermost cell is here is M. So valence electron is 1. Valence electron, how much? Is 1. Right? These valence electron, how will you find out these valence electron? First of all, find out the atomic number. Do you know the atomic number of element? There is no need of atomic weight, but we mentioned the atomic weight, only need of atomic number. Okay? So first of all, find out the atomic number. The number of electron revolving around the nucleus. How many electron revolve? Just take draw it. Sodium neutron is 23 minus 11 is the 12, and proton is just equal to the atomic number, say 11. First cell contains 2 electron. Second cell contains 8 electron. Okay, I think this one is a previous homework, so all the students done this properly in manner. This one, draw the structure of the atom and configure it, distribute the electron in each and every cell, K cell, L cell and M cell. Okay. So number of electrons revolving around the nucleus is equal to the atomic number. Thick. Write down the electronic configuration of electron revolving around the nucleus. So 2, 8, 1. Yes. And number of electron in outermost cell is known as its valence electron. So this one is a valence electron. So this is an idea of valence electron. Just take another example. Chlorine. Chlorine is 17 and atomic weight is 35. I think previous homework is atomic number 1 to atomic number 20. So we have taken example between these atomic number 1 to 20. So 17 is K, again 2, L, 8. And M is 7. So valence electron is how much? Here valence electron is how much? That is 7. And how will you draw it? Nucleus, neutron, proton. How many neutron? Atomic weight A minus Z. This comes out to be 18. Okay? And atomic number is 17, which is equal to number of proton, that is 17. And now distribute the electron. K cell contain 2, L cell contain 8, and A, L and
element contains 7. So distribute 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this one is a valence electron. Number of electrons present in the outermost cell is known as valence electron is 7. Sodium contains 1 electron and chlorine contains 7 electrons. Okay. Now these valence electron responsible for the chemical property of the element. How will you decide that these elements give what the chemical property? Okay, see here. When these elements approach to each other, then outermost cell acquiring a complete octet by transferring the electron or by sharing the electron. So these process, when transfer and sharing of electron takes place, then energy loss gain takes place. So on the basis of number of valence electron, atom acquire the stable configuration by sharing or by transference of electron. That's why energy loss gain takes place. So these valence electron responsible for the chemical property, and inner cell electron don't participate in any chemical reaction, because these inner cell acquire a stable configuration containing full electron according to Borbori scheme. K contain 2, which is completely filled, and L contain 2 and square 8. So this one is also complete. So here also 2 and 8, K and L. So these inner cell electrons don't participate in any chemical reaction. Okay. Now, valence electron and chemical property, how will you relate? First of all, element having same number of valence electrons, like, hold on, lithium 3, sodium 11, potassium 19. This one is 21, 281 and 2881. These elements containing 1 electron in outermost cell, all of same. So chemical property of these elements are same, because these contain same number of electron. That's why these elements give the same chemical property. How will you decide? These metal combined with water, react with water to form corresponding hydroxide like MOH. With the evolution of hydrogen gas, so formation of alkali takes place by the reaction of water. So these are called alkali metals due to formation of alkali. Okay, and take another example like chlorine. So see here, chlorine is 9, chlorine is 17, bromine is 35, and so many other. 2, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 10, 18 and 7. So these elements containing 7 electrons in outermost cell. So these elements give the same chemical property. Okay, due to 7 electrons, all the elements contain equal number of valence electrons. So chemical property of these elements are similar. But chemical property of these elements and these elements are different. Why? Because these elements having different number of valence electrons. These are called alkali metals and these are called halogens.
These are called halogens, and these are called alkali metal. Okay. These elements give the alkali metal property, and these elements give the halogens property, and these two give combined different chemical property. When these elements are approaches to each other, energy loss then takes place, and after chemical reaction get a stable configuration by acquiring 8 electron outermost cell according to Bohr-Waring scheme. It's okay. Now you have to resolve more and more problem related with the valence electron, and next topic for this the isotopes, isobar, isotone, and so many other type of definitions. Today we are going to explain only one type of matter, that is isotopes. Yes, isotopes. Iso means same, topes means atomic number. Element having same atomic number but having different atomic weight. Here, same atomic number and different atomic weight. These are called isotopes. Getting some example, hydrogen is 1H1, 1H2, 1H3. These are three isotopes of hydrogen, 1H1, 1H2 and 1H3. This one is known as protium, deuterium and tritium. Same atomic number, all of having same atomic number, having different atomic weight. Okay. Now another one is the carbon. Carbon is the 6C12, 6C13 and 6C14. Oxygen 8O16, 8O17, 8O18. Chlorine is the 17Cl35 and 17Cl37. Okay, these are the isotopes. So these isotopes having same chemical property, reason behind it, all are having same atomic number, means number of electron or number of valence electron are same. That's why these are having same chemical property and having different atomic weight, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18 and so many other. I think most of the element having isotopes, so having different atomic weight and having different neutrons. This is 0, this is 1, this is 2. Okay, number of neutrons are different, atomic weight are different, atomic number are same. These are the property of these isotopes. So student, again we are definition of the isotopes. Element having same atomic number and having different atomic weights are known as isotopes. Student, this is all about today. Best of luck. Thank you for attending the class. Hello everyone, with a pleasant morning. I am Pooja Vajpayee at the platform of such a prestigious organization, Shivaji Group of Institution. Welcome you all with a video lecture class. My dear student, in your previous lecture class, we were studying the chapter that was in short story. I hope so that Sir has taught you this chapter, and it is the portion that is in English literature, that is the portion in the short story, and that is very important and prominent topic, chief theatre.
Chief Seattle speech. So today we will discuss about it, what is the content about it and what is about it. Why is it very important for you? Why is it very prominent for you? Student, it's very important in the history of English literature. It's very important. So today we will discuss it something about it. So before going through the text of this speech, we will come to know what is it actually, what is about it, and what is the content about it, and why it is so important. So student, as you know that speech is very important in your day-to-day life, and it's a part of your student life. Whenever you have to deliver any speech, whenever you have to say something to someone, so you always try to make it effective so that that impression will be good. So what you do for that? You just try to recollect. You just try to recollect different types of the words, like hi-fi words and different types of the words that give something another meaning than its literal meaning, so that your speech will be effective. So these are the things that we do for making our speech effective, for making our speech impressive. Fine. So these are the things that we do in day-to-day life. Whenever we have to participate any debate or any speech competition like this. But this is the Chief Seattle speech. This speech is very important, and I'll tell you something about it. Something about the plot of it, the background of it. Then we will study the text of this one. So, Chief Seattle speech. This one we will learn something. The Seattle. Seattle was born around 1780 near Blake Island, Washington. Seattle earned his reputation at the young age as a leader and a warrior. So he was a leader of Red Indian who were Native American, and these were the people, those who don't had possession of buying lands, America, and they don't have a rights to live there. So this is the thing that was going on at that time. So we will see that Seattle is a person who was a leader of Red Indian and Native Indian. So Red Indian and Native Indian, these were the tribes of that people, and he united 6 of them. He was in the favor of living in harmony with white people. He was in favor of them. It was his favor. He just wanted that these people will live with them as a friends, as their colleagues, like this. And because there was lot of bad blood between Red Indian and white people, lot of bad blood. They had enmity between them. They didn't like them. So that's why they had bad blood between them. And US military launched many attacks against them and killed them by thousands. So US military had attacked many times on them, and they have different types of the weapons, just like different types of the guns. And Red Indians only have arrows like this. They don't have such type of the weapon. So they killed many of the Red Indians and Native American. Chief Seattle advocates for the land rights of Native Americans. So in this speech, he advocates for the land rights of the Native Americans, and he gave a very publicizing speech at a place that named a Seattle after him in the America today. So you can get the point that because of his speech, that place is named Seattle. So that is very important, that is very prominent and significant speech. That was a really very effective and impressive speech. So student, first we will discuss about the plot of this story. The plot of the story, this is written over here. You can see Chief Seattle delivers a speech at Washington in 1854. So he delivered his speech in the year
1854, and the place was Seattle, that was in Washington. Fine. And the second one that is connected to this one, thanks the white chief for the acknowledgement of his greeting of friendship and goodwill. So he advocates the government of the white people that they must accept his friendship and goodwill with them. They wanted to make a friendship with them. They wanted to create a harmony between red Indian and white people. This was the background. This is the plot of this speech. And the third one is that it speaks in favor of ecological responsibilities and respect of Native American land right. So he's just explaining here. He's just explaining here that red Indians also have a rights, also have a possession of having some lands for their living, for their residing. They must have rights. They must have friendship and relationship between them. They are not something different from them. They also must have same rights like this. So this is the thing that he wanted to deliver through his speech. That's why his speech was very important, very significant. It's really very impressive and effective to the reader and the people who were before them. And the fourth one appeals the white people to be generous. So in his speech that he delivered to the government of white people, he just tried to convince him that the white people must be generous. The white people must be kind and just to them. They don't hate to them. They must be generous. They must be kind to them. And the next one offers greeting of friendship, and he wanted that they must have a mutual understanding. They must have a harmony. They must have a feeling of friendship and generosity between them. That's why he delivered a speech there. So, and the last point is their wants is tribal to be protected. So the tribal that was there, so he belonged to Squamish, and he wants to belong to Squamish and Demolish, like this Demolish tribe that was written over here. So Chief Seattle was really chief of the member of Squamish tribe, and he was a prominent figure among his people. So he was a leader. He was a leader of Squamish tribe who pursued a path of accommodation and reconciliation with white settlers. He path of accommodation with the adjustment, reconciliation, feeling of friendship and goodwill. So he wanted to he wanted to form a feeling of goodwill and friendship, and he wanted that Native American and Red Indian must also be adapt themselves to that situation. He must have a right and possession to live there. They must also be equal with them, like this. The following is a widely published speech attributed to Chief Seattle, in which he argues with gentle irony in favor of ecological responsibility and respect of Native American beliefs, tradition, and land rights. So through this speech, Seattle has given his explanation, or he is just doing argument that Native American and Red Indian must also have a possession of residing there, possession of living there, and he just wanted to say something in favor of them, because they are very down to earth. They don't have such types of the rights as the white people have.
So he just giving his speech in favor of Red Indians, in favor of Native American. Okay, so although what he actually said may have been lost through translation and rewriting, this speech or letter attributed to Chief Seattle has been widely cited. So his speech is slightly complicated, his speech is slightly tough to be understand. That's why it was translated many of the languages, but the hidden meaning of that speech is really very effective, really very impressive. That's why after him the name was placed at a state. Okay, so it was said that a powerful bittersweet plea. Plea means you can say appeal, that the way of requesting, the way of saying something in favor of someone. So it was a bittersweet, it was a mixture of sweetness, and it's a mixture of bitterness. So it's a mixture of pleasure and pain. You can see the different taste of the thing in his speech, that is a mingle of humor and pathos, you can say, that was written in respect of Native American and Red Indians. So he just wanted that Native American and Red Indians have a feeling of reverence, have a feeling of regard. That's why he delivered this speech at Seattle. American rights and environmental values. They must have all the values, they must have moral values. So students, you are seeing that the city of Seattle in the state of Washington. Where is it? Where is this city? The city of Seattle, it is in the state of Washington in the USA, is named after him because of his effective speech, because of his impressive and mind-blowing speech. The name was Seattle after him. I hope so that you have got something about it. So let's proceed the theme of this one. So the theme of this one is that in this speech, Chief Seattle, who belongs to Squash tribe, strike a note of reconciliation between his tribal people and the white man. So this was the idea that struck into his mind, that I must have delivered a speech in favor of white, in favor of Native American, or in favor of Red Indians. So that was the speech in favor of those people. This was a different tribe. This was he belonged to Squamish tribe, and he was the leader of them. He was a prominent figure of them. He pursued the path of accommodation to white settler in the USA state of Washington. His speech contains the arguments in favor of ecological responsibility and respect of Native Americans for land rights. He recollects the time when the hostilities exist between the white man and his tribal people. So it was the time when there was a feeling of bad blood, when they both were strong enemy between them, who were white people and Native American. But he no longer wants the hostilities to return. He strike a hope. So he didn't want that it may be any longer, it might be any longer, fine. He didn't want that thing. He wanted to create harmony, he wanted to generate or originate harmony between them, because they wanted to create a feeling of friendship with them, fine. He strikes a hope in his speech that their good father in Washington would protect them, and his brave warriors would prove to be a great wall of strength against their ancient enemies. So he wanted that the father of Washington, it means the government of the Washington will really protect you. I hope so. It's my hope, it's my desire
and definitely he will protect you from this adverse circumstances, from the difficult situation that is going on before you. You will really save yourself from that difficult situation. He regrets that the God of the white people had forsaken them. He feels sad that their own God, the Great Spirit, had also forsaken them. He is conscious of the fact that the white people and the tribal people are two distinct races with the separate origins and separate distincts. So these are two tribes, the Native American and the white people. So he regrets. He regrets himself that the God will really that the God of the white people had forsaken them for that thing, and he feels sad that their own God, the Great Spirit, has also forsaken them. That spirit, the feeling that the spirit really will forsake you, but he strike a note of optimism when he said that his people will accept the new proposition sent by the white men because it seemed to be fair. So he feels that he hopes that he will accept the proposal of the friendship and the goodwill that has been come from the white people, and people will be free to visit the tombs of their ancestors, friends and children at any time. So they must also have a possession, they must also have a rights of living there. The dead people of his race will love these somber solitude, and the nights the deserted street will be thronged with the returning horse that one fill them still love this beautiful land. So this is the thing, this is the gist of these lines are that again he will get the respect and reverence and all the rights and the possession that they have lost for a longer, so they will get it very soon. This was the thought, this was the idea, it was the opinion of Chief Seattle. So student, this is the plot, and the thing that many points are there to be continued is the story. Chief Seattle, if we talk about the Chief Seattle, so he is a prominent figure in his tribal people, and he recollects hostilities between the white people and his tribal people, and thinks of two districts. He just want to demolish the bad blood and the enmity between the white people and the native people, and thinks of two distinct races. He really started thinking two races, Native American and white people. White man's religion written upon tablets of stone by the orange figures of God. The rules and regulation and the religion of white people was really stable. They are not movable. The white man provision seems fair. Chief Seattle thinks that after the red man, the shores will song with the invisible dead of his tribe. The white man will never be alone. So the white man will never be alone. There will be harmony between the white people and the red Indians. So this is the gist, this is the plot, and this is the summary of Chief Seattle's story. So student, I hope so that you have got it something. So let's start the text of this one. So this one is your text. The book name is Treasure Trove, a collection of ICSC poems and short story. So this one, Chief Seattle, authentic text of Chief Seattle Treaty Orientation. It was written 1854. Yonder sky that has wept tears of compassion upon my people for centuries untold, and this too has appeared changeless and eternal may change. So here he is saying that yonder sky, the sky is moving here, it is going in different direction, and has wept tears of compassion upon my people for centuries untold. So it seems to us that for a long time, for centuries, the sky has given us the protection and the relaxation and the relief, and we are under the supervision of sky. So we are having such a type of the love and affection to that point of view.
So student, you have seen that the text is started with this view, with this opinion. So you have to recollect all the points of this Chief Seattle story, so that you can connect it with this text. So the text will be continued in your next class. I hope so that you have got it very well. We will continue the text of this speech in our next class. That is enough for you today. Thank you and have a nice day to all you all. Good morning, students. Students, in our today's video lecture, we will solve numerical problems of the topic which we have studied, force. And I think you are also solving the numerical problems of this topic in your homework. And but you are not actually asking the questions problems. You just WhatsApp me on my numbers if you are facing any numerical problem in this particular chapter. So just WhatsApp me and I will solve your problems. I will try to solve your problems and do as much as numerical as you can. So start with this problem for today's lecture. A car being driven at 60 km R inverse is to be stopped by applying the brakes. तो यहाँ पर समझते हैं पहले क्वेश्चन को. अ कार बीइंग ड्राइवन, एक कार है जो कि चलाई जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर. इस स्पीड से वो क्या हो रही है, चल रही है. तो ये उसकी कौन सी स्पीड है, चल रही है. आपने क्वेश्चन पढ़ा कार चल रही है, ठीक है, यानी इसकी इनिशियल है. सो इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से. स्मॉल यू आपका कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अभी ये आपका एसआई सिस्टम में नहीं है. एसआई में होता तो यूनिट क्या होती, मीटर पर सेकेंड, ठीक है. इसको हम लोग अभी देखते हैं आगे क्या है. स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक. इसको स्टॉप किया जा रहा है, ब्रेक लगाएंगे, आपको पता है कार क्या होगी, स्टॉप होगी. स्टॉप हो रही है तो फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है हमें, जीरो. तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, जीरो. कार रुक गई तो वेलोसिटी क्या, जीरो. तो फाइनल वेलोसिटी v क्या है, जीरो. विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 5. अब जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद कार को मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक जाना है, 5 मीटर. मतलब आपने यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करी, कार को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल होने पर रुक ही जाना है, ठीक है. तो वही लिखा हुआ है विद इन डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. 5 मीटर की डिस्टेंस के अंदर उसको क्या होना है, रुक जाना है. लिमिट आपकी 5 मीटर है. तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए कार ये चल रही थी, स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे कार को ऑब्जर्व किया, कितनी वेलोसिटी है, 60 किलोमीटर पर आवर. अभी आपने ब्रेक नहीं अप्लाई किया तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 60 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर वेलोसिटी 60. यहाँ पर आपने ब्रेक अप्लाई किया, इस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, अभी आपने जस्ट ब्रेक अप्लाई किया है तो यहाँ पर इस समय इंस्टेंटली वेलोसिटी क्या होगी, 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर. अब ब्रेक अप्लाई हो गए सडन, उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम. यानी जहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, यहाँ पर कार स्टॉप हो गई, क्या हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई. तो यहाँ पर वेलोसिटी कार की फाइनल क्या होगी, जीरो. और यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी थी यू. तो इसके बीच में हो क्या है, कार की वेलोसिटी का डिक्रीज होना, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. 5 मीटर की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कार की क्या होगी, एस की वैल्यू है 5 मीटर, ठीक है. रिटार्डेशन हो रहा है. और जो यहाँ पर देखिए पैसेंजर और कार का जो वेट है टोटल वो 1800 kg है. तो ये आपका एम आपका मास है, वेट लिखा है जरूर लेकिन ये केजी यूनिट मास की है, 1800 kg. ये एसआई सिस्टम है. आपको पता फोर्स निकालना, अगर आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज फोर्स विच मस्ट बी अप्लाइड बाय द ब्रेक. तो F इक्वल टू ma, यानी आपको ए की वैल्यू चाहिए और ए आपका यहाँ से आएगा. तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में. आपने देख लिया है क्योंकि ये मीटर में है तो आपको मीटर पर सेकेंड चाहिए. आपको मैंने बताया है 1 किलोमीटर पर आवर. 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर, ये वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर से क्या चाहिए, स्मॉलर. स्मॉलर वैल्यू आपकी क्या होती है, 5/18. 18/5, 5/18. तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं, ठीक है. तो 16 कितने रहेंगे, तो 60 × 5/18. तो ये आपका, इसको स्टूडेंट डेसिमल में कन्वर्ट करने की मिस्टेक मत करा करिए. दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर. हमेशा मैं बताता हूँ, अगर ये फाइनल आंसर होता तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते, अदरवाइज इसे जैसा है वैसे रखिए. आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए
3 से 3 2 जाए, ये आपका 6, 2 से काट दिए 10, ये आपका 3। तो ये आपका आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। और इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब u है, v है, s है, सब कुछ है, हमें a चाहिए। क्या टी है, टाइम नहीं। तो हम u, v और s को देखकर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v, u और s। थर्ड इक्वेशन देखिए, v² = u² + 2as। थर्ड इक्वेशन होती है v² = u² + 2as। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला आपने किस में अप्लाई किया, प्लस। लेकिन आपको पता है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब है आप यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में अगर माइनस रखते हैं, -a करते हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं क्रिएट होगा, डिफरेंस बस ये आपका रहेगा। अगर आप +a लेकर सॉल्व करते हैं तो आंसर में आपका निगेटिव साइन क्या होगा, शो होगा, आंसर आपका निगेटिव आ जाएगा। और ऑलरेडी आप यहाँ पर निगेटिव लेकर चलते हैं, तब a की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है। तो ये बात कंफ्यूजिंग नहीं है, हम प्लस का ही लेके चलेंगे हैं। 0² u की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 50/3 का होल स्क्वायर + 2as। s की वैल्यू आपकी क्या है, 5। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या आता है, ये वैल्यू इधर जाएगी, माइनस हो जाएगी। 50 इसका स्क्वायर हो जाएगा 2500, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 5 × 10, ये आपका आ गया 8। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 से 0 आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो a की वैल्यू आपकी फाइंड की क्या है, -250/9, यूनिट जरूर लिखिए, मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। देखिए निगेटिव आ गया ना, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये वैल्यू आप यहाँ पर पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव लेकर सॉल्व करते हैं तो आंसर में माइनस साइन आएगा। तो सही है, आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें लगाना है f = mn, ये पता है हमें, f = mn। m की वैल्यू क्या है, 18। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखेंगे, प्लस की माइनस। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड यानी हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है। तो सिंपल मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे 250/9। सॉल्व कर लेते हैं, 9 से कैंसिल। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको डेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट कर देते, ठीक है, तो ये जो इजली ये जो कैंसिल होके आंसर देखिए आपका होल नंबर्स में आ जाएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि आप पॉइंट में अप्रॉक्सीमेट करके वैल्यू लेंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसको कभी भी बीच में ऐसा हो तो आप इसको एज इट इज जो भी वैल्यू है वही रखिए। तो ये हो जाएगा 200, और 200 को मल्टी करिए, 25 × 50, 0 0 0 0 0 0, और SI यूनिट में आंसर आ गया न्यूटन, यानी 50,000 न्यूटन। ठीक है। इतना फोर्स अप्लाई। चलिए, तो अच्छा न्यूमेरिकल था, कई चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ बॉडी ऑफ मास, a body of mass 0.25 kg moving with a velocity moving with a velocity 12 meter second inverse is stopped by applying a force of 0.6 Newton. Calculate the time taken to bring the body to rest. To bring the
बॉडी टू रेस्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब बॉडी ऑफ मास आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, m की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 0.25 kg। ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी, तो ये इस वेलोसिटी से मूव करेंगे। आपने देखा क्वेश्चन को पढ़ा, समझ में आ रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट था बॉडी थी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है स्टार्टिंग में 12 मीटर सेकेंड इन पल्स। ऐसा सिस्टम इसको स्टॉप करना है। क्या करना है, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स। इतना फोर्स लगाकर इसको स्टॉप करना है। तो फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.6 SI यूनिट में है, न्यूटन। ठीक है, स्टॉप करना है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपको पता है 0। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। कैलकुलेट द टाइम, कितना टाइम लगेगा, टी की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए आपने फोर्स अप्लाई किया, तुरंत तो नहीं रुक जाएगी, आपने ब्रेक लगाया, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर दी है बाइक या कार, फिर स्टॉप होती तो कितना टाइम लगेगा उसको स्टॉप होने में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट में ब्रेक अप्लाई किया, ये चल रही थी, यहाँ पर ब्रेक लगाया और ये यहाँ जाकर रुक रही है, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी और यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम भी तो लगेगा। तो वो टाइम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जिस समय ब्रेक लगाया, जहाँ पर स्टॉप किया, यहाँ पर 12 था, फोर्स लगाया 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, और जब रुक गई तो 0 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका रिटार्डेशन हो रहा है, निगेटिव एक्सीलरेशन। तो पहले तो एफ और एम से आप न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करिए, एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ से ए निकाल लीजिए। ठीक है, एफ की वैल्यू 0.6 SI सिस्टम में, ए SI सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज सॉल्व करिए। ए की वैल्यू 0.6 अपॉन 0.25, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 0 करिए। ठीक है, 25 से काट दीजिए, 25। देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करें, कैंसिल, या आप ना काटिए, ऐसे रहता कर दीजिए। 5 से काटिए, 12/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह जाएगा आपका 12/5। अब v और u, तो v इक्वल टू u प्लस ए। बट यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है रॉन्ग आएगा। ध्यान ये आपको रखना है, a की वैल्यू आपने जो निकाली है f इक्वल टू ma लगाकर, ये पॉजिटिव है। फॉर्मूला भी आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव। यानी आप कहीं पर भी निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ना ही यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आई है, और फार्मूला भी आप पॉजिटिव ले रहे हैं। और पॉजिटिव वैल्यू अगर एक ऐसे पुट कर देंगे तो ये तो आपका क्वेश्चन किसका बन गया, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का। बट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, स्टॉप हो रही वेलोसिटी यानी निगेटिव एक्सीलरेशन। मतलब आपने एफ इक्वल टू एम ए लगाया, वैल्यू तो पॉजिटिव आई, बट जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, अगर फॉर्मूला पॉजिटिव लगा रहे हैं तो वैल्यू निगेटिव जरूर पुट करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यू की वैल्यू क्या है 12 प्लस ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, या तो आप माइनस यहाँ पर ही कर लीजिए पहले ही, तो प्रॉब्लम नहीं है, माइनस कर लीजिए, क्योंकि निगेटिव का क्वेश्चन है, निगेटिव एक्सीलरेशन तो माइनस का ही लगाइए। पहली क्वेश्चन लगा दी, v बराबर u माइनस 80। अब a की वैल्यू आप जो है वही पुट करके पॉजिटिव, एटलीस्ट मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आपका निगेटिव साइन होना चाहिए। और v की वैल्यू क्या है 0, ये वैल्यू इधर आ जाएगी 12/5, पॉजिटिव हो गई t, ये आपका 12, ये उधर चला जाएगा आपका 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। और SI सिस्टम में यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आ गया t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज पॉइंट है सारे, इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन को इसीलिए समझ ही करिए, सिर्फ फॉर्मूले बेस पे करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए लगा दिया, v बराबर u प्लस, तब तो आप चैप्टर नहीं कर पाएंगे। इसको समझिए रियल में कि हम अप्लाई कर रहे हैं ब्रेक, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का क्वेश्चन बनना है, नेगेटिव रिटार्डेशन हो रहा है, ए की वैल्यू है बराबर है से, तो आप लगाएंगे तो पॉजिटिव आएगी, बट यहाँ पर आप निगेटिव फॉर्मूला लगाएंगे या निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे अगर पॉजिटिव फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर फॉर remembering you students. So apply the concept and solve the numerical problems from different books. So thank you students. Hello students, welcome in our online class of biology. As you all know that nowadays we are discussing about lesson the flower, and today I am going to tell you about last two topics of this chapter, which are presentation and inflorescence. So what is presentation? Within the ovary, ovule remains attached to a parenchymatous outgrowth. That outgrowth is known as placenta. The arrangement of placenta within the ovary is known as presentation. जो हमारा ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि ओव्यूल्स जो है ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते
प्लेसेंटा, दैट मीन्स ओव्यूल्स प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं इनसाइड द ओवरी। और ये अरेंजमेंट जो होता है प्लेसेंटा का इनसाइड द ओवरी, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। अब ये क्यों अटैच रहते हैं? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? दे आर अटैच्ड विद द प्लेसेंटा for their nutrition because the ovule cannot get nutrition of their own. That is why they are attached to placenta for the requirement of nutrition. They can need nutrition which they get from the placenta. ये जो placenta का arrangement होते हैं सारे ही organisms में होता है। जब भी babies को, अगर हम human beings की बात करें तो human beings में भी यही होता है कि जो baby है वो placenta से attached होता है from their mother, क्योंकि वो अपना food खुद से उसको नहीं मिल सकता, तो वो जो मदर फूड ईट करती है उसी से उसको भी न्यूट्रिशन मिलता है, और वो न्यूट्रिशन उसको मिलने के लिए उसका अटैचमेंट होता है थ्रू प्लेसेंटा। यही सेम कंडीशन यहाँ भी है, जिस चीज से अटैच्ड है पेरिकार्डिटस आउटग्रोथ से उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, और जो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इन्फ्लोरेसेंस। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? फ्लावर्स में अगर सिंगली और इन ग्रुप फ्लावर्स जो है वो ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर कोई सिंगल फ्लावर भी किसी अलग सी जगह प्रेजेंट हो सकता है। फ्लावर्स के अरेंजमेंट का कोई पर्टिकुलर तरीका डिसाइड नहीं होता। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? मैनर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जिस एक्सिस से फ्लावर को ग्रो करना है उस एक्सिस में उसका अरेंजमेंट कैसा है, वो सिंगल प्रेजेंट है, वो ग्रुप में है, क्लस्टर्स में, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। कॉमन एक्सिस विच ग्रो इन इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड पेडिकल। अगर एक कॉमन एक्सिस है जिसमें सारे फ्लावर्स प्रेजेंट है, इन्फ्लोरेसेंस हो रही, तो फिर इसको पेडिकल बोला जाता है। और जो स्टॉक होता है इंडिविजुअल फ्लावर का, जो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, जिससे फ्लावर अटैच्ड होता है, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। जो एक्सिस होती है वो ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है, दोनों केसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। टू मेजर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोस या फिर साइमोस। What is racemose and cymose? अगर main axis never ends in a flower, continues to grow bearing flowers in acropetal order, younger near the tip and older towards base. This arrangement is known as racemose. इसमें क्या है, जो main axis होती है ये end नहीं होती, यही जो है grow होती जाती है, और इसी पे जो है different side by side जो है acropetal arrangement में flower जो है वो present होते हैं। इसमें क्या मेन एक्सिस का कहीं पे हमें एंड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो फ्लावर्स कंटिन्यूअसली ग्रो होते जा रहे हैं इसी एक्सिस पे। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेसिमोस अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट हम फाइंड कर सकते हैं मस्टर्ड में, स्वीट पी में, या फिर कोरिएंडर में। अगर हम साइमोस की बात करें, साइमोस में क्या कंडीशन होती है, जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लावर में एंड हो जाता है। दैट मींस कि यहाँ पे मेन एक्सिस ग्रो होता जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सिस है एंड, एक्सिस एंड, एक्सिस एंड। इसमें कोई भी एक्सटर्नल ग्रोथ अलग से प्रेजेंट नहीं होती है, मेन एक्सिस से फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद वो एक्सिस का वहीं पे एंड हो जाता है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस अरेंजमेंट। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो यंगर फ्लावर्स जो होते हैं, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, वो कहाँ होते हैं, टिप पे, क्योंकि ये टिप ग्रो करती जाती है, फ्लावर्स ऊपर से प्रेजेंट होते जाते हैं। यंगर फ्लावर्स टिप पे होते हैं एंड ओल्डर फ्लावर्स जो है वो बेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और इस कंडीशन में जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिपेटली अरेंज होते हैं, सब बेस के आसपास ही अरेंज रहते हैं। ये कंडीशन हम मस्टर्ड, स्वीट पी या कोरिएंडर में देख सकते हैं, और साइमोस कंडीशन हम जैस्मिन या फिर कॉटन के प्लांट्स में देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। You can revise this chapter by the previous lectures. Thank you so much. Have a nice day.